नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 5वां केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। इस बार इस बजट में महिलाओं, युवाओं, नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, हर किसी के लिए बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बार जो सबसे बड़ी बात रही इस बजट की वो ऐसा था कि 9 साल के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है, जिसकी मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। तो इस बदलाव की घोषणा के साथ ही अब हम ये समझेंगे कि इस बार का जो बजट रहा वो मिडिल क्लास को किस तरीके से राहत देने वाला रहा। खास बात यह है कि बजट पेश होने से पहले ही निर्मला सीतारमण इस तरह का संकेत दे चुकी थी कि इस बार मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की जाएगी। उनके इस बयान के बाद से ही मिडिल क्लास ये उम्मीद जता रहे थे कि इस बार बजट में कुछ ना कुछ टैक्स स्लैब को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। और आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा कर दी। अब हम ये समझेंगे कि पहले किस तरह का ये टैक्स स्लैब था और अब बदलाव के बाद क्या कुछ नई चीजें होने वाली हैं, या फिर टैक्स स्लैब में जो बदलाव की घोषणा की गई है उससे मिडिल क्लास को किस तरीके से राहत मिलेगी। तमाम मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं, उन्हीं के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। शर्मिष्ठा घोष जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं टीजीसी से। अजीत कुमार झा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं ब्रिड्स इंडिया से। और थोड़ी ही देर में हरप्रीत सिंह सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रेसिडेंट है सीनेट नाइट से। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है लाइव हिंदुस्तान पर। मैं शुरुआत अजीत जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। जो टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है, 9 साल से इसका इंतजार था, लंबे समय से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ था और मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीद थी। पहले किस तरह का पैटर्न था सर, और आज जो घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने, उसके बाद ये पैटर्न कैसे बदला है और किस तरीके से राहत मिलने वाली है? 2024 का चुनाव आने वाला है, तो और ये अमृत काल का पहला बजट है। ये दोनों जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा, कंस्ट्रेंट्स सीतारमन के ऊपर, निर्मला सीतारमन के ऊपर। तो जी। ये जरूरी था कि एक तरह से पुश किया जाए मिडिल क्लास के तरफ, फार्मर्स के तरफ, गरीब लोगों के तरफ, वोटर्स के तरफ बेसिकली। तो ये जो इसको मैं पॉपुलिस्ट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वेलफेयर ओरिएंटेड बजट है। मतलब पिछले जो आपने कहा कि 10 बजट यदि लिया जाए 2014 से, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड बजट है। और ये ऐसा है कि इसमें चेंजेस जो है वो तो अभी इनफैक्ट बजट अभी अनाउंस ही हुआ है। चेंजेस ये है कि नो टैक्स फॉर इनकम अप टू 3 लाख पर ईयर, will cut personal income tax for slabs up to 5 from 6। उसके बाद है टैक्स एग्जम्पशन अप टू 7 lakhs पर ईयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है टू रिमूव मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ ₹10,000 ऑन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, exempt tax on income towards हाउसिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रियल एस्टेट में एक तरह से पैंडेमिक के बाद पहली बार एक तरह से मतलब ग्रोथ हो रहा है, एटलीस्ट ग्रीन शूट्स है रियल एस्टेट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जेम्प्ट टैक्स ऑन इनकम फॉर हाउसिंग और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज हाउसिंग के साथ साथ रिड्यूस हाईएस्ट सरचार्ज रेट टू 25% फ्रॉम 37% इन द न्यू टैक्स रेजीम। ये सब हाईलाइट है, बट उसका जो फोकस है वो ये है, एक तरह से यदि देखा जाए इन टर्म्स ऑफ टैक्स चेंजेस और इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो अनाउंस किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा एग्रीकल्चर पे पहली बार क्रेडिट टारगेट बढ़ाया गया है बजट में 20 लाख करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली जो रूरल इंडस्ट्री है, रूरल मिडिल क्लास के तरफ ये फोकस है। स्पेशली मैं कहूंगा जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, फिशरी हो, उस पर मेजर पुश है। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना का 60,000 करोड़ का टारगेट है। तो मैं कहूंगा ये बजट एक तरह से कहा जाए तो बेसिकली मिडिल क्लास ओरिएंटेड है, अर्बन मिडिल क्लास एंड रूरल मिडिल क्लास। मैंने इसलिए कहा अर्बन मिडिल क्लास क्योंकि टैक्स रिजीम बदला गया है, एक तरह से टैक्स स्लैब्स बदले गए हैं। और रूरल मिडिल क्लास में इसलिए कह रहा हूं
कि बहुत जोर पुश है एग्रीकल्चर में, स्पेशली टुवर्ड्स फार्मर्स और स्पेशली टुवर्ड्स जो छोटे, जो मिडिल क्लास है गांवों में, जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जिसको माना जाता है नॉर्मली, हालांकि वो टाइड है टू एग्रीकल्चर, जो मैंने कहा डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री। तो एक तरह से दोनों चीज है इसमें। एक तरह से मैं जी। कहूंगा वेलफेयरिस्ट है, क्रिटिक्स कहेंगे इसको पॉपुलिस्ट, और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये टारगेटेड है टुवर्ड्स 2024 चुनाव के तरफ, क्योंकि अदर देन ग्रोथ टारगेट्स भी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीब 10.5% दिया गया है। तो देखा जाए यदि बैकग्राउंड इस बजट का, पहला बैकग्राउंड देखिए तो ये पोस्ट पेंडेमिक बजट है। दूसरा जो मैंने कहा, ठीक है। ये राइट एट द पॉइंट जब ये बजट निकलने वाला था, उस समय देयर वाज दिस ग्रेट hangama on in the so called share markets because of this targeted attack on Adani. तो given all that, ये बजट जो है बड़ा अच्छी तरह से इसको 2024 चुनाव की तरफ मोड़ दिया है, नंबर वन। नंबर टू, वेलफेयर, स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास, रूरल मिडिल क्लास, एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ पुश टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि ग्रोथ बना रहे। जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, 10.5% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, रियल करीब करीब 7% ग्रोथ जो है ये अचीव कर लेगा। शर्मिष्ठा जी, जीडीपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये कर व्यवस्था को लेकर आपका एक कमेंट चाहूंगी। टैक्स स्लैब में बदलाव बहुत बड़ी उम्मीद थी और आखिरकार ये उम्मीद पूरी कर दी गई। तो नौकरी पेशा वर्ग को कितनी बड़ी राहत, और नई कर व्यवस्था की वजह से अब आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव होंगे? सबसे पहले मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूंगी। आज ठंड भी थोड़ी है, लेकिन हम लोग काफी उम्मीदों के साथ बैठे हुए थे। एंड टैक्स रिजीम में जो चेंज हुआ है उसने थोड़ी सी तो डायरेक्ट राहत सबको पहुंचाई ही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और हम लोग सब बड़े ध्यान से बजट देख रहे थे। निर्मला जी ने एक समझदारी का क्या काम किया, सभी लोग वेट कर रहे थे कि इनकम टैक्स के बारे में उनका कमेंट आए, और उन्होंने वो सबसे लास्ट में दिया। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि सब लोग बैठ के पूरा बजट देखें, उनकी सब बातें सुने, और तब वो आखिर में टैक्स पर लेकर जाएं। जैसे सर ने भी अभी बोला, दिस 7-year थिंग इज अ गेम चेंजर। जो उन्होंने ये 7 लाख एंड ऑल्सो एग्जेम्पशन अप टू 7 लाख, ये थोड़ा गेम चेंजर है। बाकी इसमें थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जो इमीडिएटली हो सकता है एक बार में लोगों को समझना आए कि क्या एग्जेम्पशंस हैं, क्या एग्जेम्पशंस नहीं हो सकती हैं। बट मुझे लगता है कि जो ये न्यू टैक्स रेजीम की जो बुनियाद है, ये काफी अच्छी इसके साथ बनेगी, क्योंकि इन्होंने इसको बैकवर्ड लिंकेज दिया है हर तरह के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ। इन्होंने इसको बैकवर्डली लिंक किया है सारे स्टार्टअप्स एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स के साथ, महिलाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वगैरह वगैरह। तो जब तक ये फ्रूटेशन पर आएगा, जब तक इसका हम एक्चुअल इफेक्ट देखेंगे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स तब तक एंटरप्रेन्योर्स बन चुके होंगे। सो मुझे लगता है कि ये जो न्यू टैक्स रेजीम में जो इन्होंने जो इसकी बुनियाद रखी है इस तरह के कर व्यवस्था के साथ, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हम ये नहीं कमेंट कर सकते अगले साल हम इलेक्शन में जा रहे हैं कि पॉलिटिकली देश किस रूप जाएगा, हमें नहीं पता। बट एज अ मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन इसके काफी पॉजिटिव इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे रहेंगे। एंड हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स सिस्टम के अंदर ला पाएंगे। इंक्लूसिवनेस मुझे लगता है काफी एक बड़ा फीचर रहा है इस पूरे बजट का, क्योंकि उन्होंने काफी सारे की पॉइंट्स इंक्लूसिवनेस के आसपास। ठीक है, मैं ये चाहूंगी कि पहले जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में भी आप थोड़ा डिस्क्राइब करें कि किस तरीके से अभी तक टैक्स पेयर्स अपना टैक्स दे रहे थे और अब आने वाले वक्त में क्या कुछ चेंजेस है। ये पता है कि रिलीफ मिल गया है, बहुत बड़ा रिलीफ एक तरीके से माना जा सकता है। पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या कुछ बदलाव हुए? देखिए, पहले क्या था, ये मैंने अपने पिछले साल भी मैं कहीं पर ऐसी डिस्कशन करी थी बजट में, और मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, वो थोड़ा वायरल भी हो गया था। उसमें मैंने ये बोला था कि भाई हिंदुस्तान में, क्योंकि वो लोग ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट वायरल हो जाते हैं, सो मैंने सिर्फ ये बोला था कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स वही लोग देते हैं जो उससे बच नहीं सकते, कि जो सैलरीड है उसका इनकम टैक्स ऑलरेडी डिड्यूस होकर उसके बेचारे के हाथ में सैलरी आ रही है,
जो बच सकता है वो तो बचता ही है। तो मैं तो ये यहाँ तक बोलती थी कि भाई बंद कर दीजिए इनकम टैक्स, मत लीजिए, तो कोई फायदा नहीं है उससे। आई मीन डायरेक्ट टैक्सेस पे ध्यान दीजिए, कुछ और करिए। लेकिन अगर उसी सिस्टम के अंदर हम उनको एटलीस्ट, मैं कहती हूँ रिगलिंग स्पेस दीजिए। मैं ये भी नहीं कहती कि आप ओवरऑल सारी बेसिक चेंजेस लाइए या पूरी चीज व्यवस्था को बदल दीजिए, नहीं, बट थोड़ा सा रिगलिंग स्पेस दीजिए, थोड़ा सा कि ऐसा ना हो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा नहीं। अगर आप उस नोशन से थोड़ा बाहर निकल कर आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल लोग टैक्सेस पे करना चाहेंगे, क्योंकि हम ग्रोथ देखना चाहते हैं। इंडिया ग्रो भी ठीक कर रहा है मेरे हिसाब से। इवन पोस्ट पैंडेमिक हम लोग का रिकवरी ट्रैजेक्टरी काफी अच्छा है। बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत उत्साह है, मैं मिलती रहती हूँ नए एंटरप्रेन्योर से। इन्वेस्टमेंट्स जितनी हो रही है उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा हो सकती है। सो इट्स अ वेरी गुड मार्केट। अगर हम पुराने रिजीम में, जैसे हम अगर स्लैब्स की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, बट ओवरऑल अगर हम उसको देखते हैं, जब हमने एग्जेम्पशन को हम सीधा 5 से 7 लाख पर ले गए विदाउट एनी डिडक्शंस, मुझे अभी भी लगता है कि वही सबसे बड़ा इंजेक्शन देगा। तो उसमें एटलीस्ट जो एक डर होता है ना लोगों के मन में, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टैक्स ना हम कैसे दें, हम उस मेंटालिटी से हटे। क्योंकि जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता, वो ये सोचते नहीं, वो टैक्स मतलब टैक्स तो देना ही है, ऐसी एक फीलिंग के साथ होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के कुछ और इनिशिएटिव्स ओवरऑल इंडिया इनको ठीक है। फ्रॉम अ टैक्स सेविंग मेंटालिटी, टैक्स कोऑपरेशन मेंटालिटी की तरफ ले जाएगा। इसमें ठीक है। ये मेरा पहला बड़ा स्टेप जरूर है। अजीत जी, एक कंफ्यूजन ये भी है कि 7 लाख में जीरो टैक्स एक तरफ ये बात आ रही है और 3 से 6 लाख में 5% टैक्स। ये कंफ्यूजन है, मैं चाहती हूँ कि ये कंफ्यूजन आप थोड़ा क्लियर करें, इस बारे में डिटेल में बताएं ताकि लोग भी मतलब समझ पाए कि आखिर किस तरीके से उन्हें टैक्स पे करना है। पल्लवी जी, ये जो बजट होता है ना, ये बेसिकली एक तरह से आउटलाइन होता है। जब तक ये पूरे बजट को पढ़ा नहीं जाए और उसके फाइन लाइंस को देखा नहीं जाए, तब तक कमेंट करना उतना डिटेल्स इन सच अ शॉर्ट पीरियड, थोड़ा ऐसे जो शर्मिष्ठा जी ने कहा कि हो सकता है फिर कोई ट्वीट कर दे और कुछ और बोल दे। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इंक्रीज जो किया है ना कि 7 लाख तक जी। जो है टैक्स एग्जेम्पशन, ये बहुत इसलिए अच्छा होगा बिकॉज देखिए क्या हुआ कोरोना में, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर और बाकी जो भी मतलब जो मैं कहूंगा वेरी रिच को छोड़ के बाकी लोग काफी हर्ट हो गए। तो इसलिए ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है, ये उनके हर्ट को एड्रेस करता है। उस तरह से मैं कहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एज शर्मिष्ठा जी ने कहा गेम चेंजर है। बट इसके फाइन ट्यूनिंग जो है, इसको पहले देखना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिफोर मैं डिटेल्ड इसका जो है एक एनालिसिस कर सकूं फॉर योर व्यूअर्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी भी कहूंगा, ये बजट जो है बेसिकली ये बजट वेलफेयर ओरिएंटेड है। पहले जो पिछला यदि 4 बजट लिया जाए तो फोकस होता था और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट करते हुए ये डायरेक्ट ये बजट अटेम्प्ट किया है। जैसे 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डबलिंग ऑफ फार्म इनकम्स, तो उस तरह से ये बजट जो है ये डबल तो नहीं, पर कैपिटा इनकम तो डबल क्लेम किया है, बट एट द सेम टाइम लोगों के इनकम्स को किस तरह बढ़ाया जाए इस पर ये फोकस है। स्पेशली मिडिल क्लास, किसान, अर्बन मिडिल क्लास, रूरल मिडिल क्लास, एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर्स एंड अदर्स। ये जो है ना फोकस है इस बजट का। मैं बार बार इसलिए इलेक्शन को हाईलाइट करता हूं, उसका मेन कारण है हिमाचल में अभी चुनाव हुआ गुजरात के साथ, और हिमाचल में बीजेपी चुनाव हारी, उसका मेन कारण था मिडिल क्लास एंगर, ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन। इसको बीजेपी ने बहुत सीरियसली लिया है मैं कहूंगा इस बजट में। वो रियलाइज करती है, याद रखिएगा हिमाचल में जनरल पॉपुलेशन अपर कास्ट है और जो बीजेपी का टिपिकल वोटर है वही रिबेल किया बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी
ये सोचकर 2024 में चुनाव में जा रही है, जानते हुए कि मिडिल क्लास दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करता है और अदर क्लासेस को, साथ ही साथ ये तो जाहिर सी बात है सर, अगले साल लोकसभा चुनाव होना है तो इस बार का बजट उसी हिसाब से पूरी तरीके से बनाया गया है कि किस तरीके से हर वर्ग को लुभा सके सरकार। लेकिन जो जैसा अभी शर्मिष्ठा जी भी कह रही थी कि बड़ा एंड में जाकर इनकम टैक्स के बारे में बात की वित्त मंत्री ने, और बात भी एंड में जाके की, लेकिन कुछ कुछ कंफ्यूजन वो छूट गया है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपकी बात भी सही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद डिस्क्राइब कर पाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा इस बार की कर व्यवस्था रखी गई है। शर्मिष्ठा जी, लेकिन फिर से मैं अपने उसी सवाल पे आती हूँ कि 7 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा, लेकिन फिर उसके बाद भी सीमा तय की गई है कि 3 से 6 लाख वालों को 5% देना है, और इस तरीके से पूरा कर सिस्टम इस समय लगाया गया है। तो कब तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस समय सभी कंफ्यूजन में है कि वाकई में कितना कर देना और कितना नहीं देना है। जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया वो मैं आपको बता देती हूँ, एंड ऑफ कोर्स डेविल तो डिटेल में ही निकल कर आएगा, वो शायद कल तक हमको ठीक से समझ में आएगा। सो एक तो ये है कि 7 लाख एग्जेम्पशन नहीं है, अप टू 7 lakhs है। सो 6,09,000 व्हाटएवर 6,999 तक अगर आपका इनकम है तो आपको एग्जेम्पशन है। द मोमेंट वो 7 लाख होगा वैसे ही टैक्स स्लैब में आ गए, विच इज आई थिंक मैंने नोट करके रखा हुआ था 6 से 9 मतलब 10%। तो आप 10% पर इमीडिएटली पहुंच जाते हैं जैसे ही आप 7 लाख पर पहुंचते हैं। ओके, 7 लाख से अब ये एग्जेम्पशन एंड विदाउट एग्जेम्पशन का सारा स्टोरी है। सो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। हम डोनेशन दे सकते हैं जो भी 80G के अंतर्गत आता है वो सब टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये जो 7 लाख का स्लैब है दैट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन, सॉरी इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन से पहले अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उसका वो 0 है, फिर हम टैक्स एग्जेम्पशन निकाल देंगे। टैक्स एग्जेम्पशन जब हम निकाल देंगे तब अगर आपकी बची हुई इनकम 0 से 3 लाख के अंदर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 3 लाख से ऊपर है तो आपको 5% उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका ये स्टोरी है, बट मुझे मोटा मोटा लगता है क्यों हम ओवरऑल मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 7 लाख में अगर हम थोड़ा सा ठीक से प्लान करें तो अप टू 2 लाख तक का हम एग्जेम्पशन वाला जनरली हम ये करके चलते हैं। वी डू अवर LIC पॉलिसीज, हम अपने 80G वाले सारे ले लेते हैं, उसमें GST के जो भी हमको टैक्स रिबेट इनपुट्स मिलते हैं हम वो ले लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये लगता है कि अप टू हम कर सकते हैं। अगर हम 1 या 1.5 लाख तक की टैक्स प्लानिंग करें तो आपको पूरा 7 लाख तक आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आप अगर किसी संस्था के साथ जुड़े हुए, अगर आप सैलरीड हैं तो आप अपने HR से बात कर सकते हैं, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे बेटर कर पाए। सो ये थोड़ा सा मैं इसको ट्रिकी नहीं बोलूंगी, इट्स लाइक दो चीजों को साथ साथ देखने का की एक प्रक्रिया है कि किस तरह से हम अपना टैक्स भी बेटर प्लान कर सके। सो ओवरऑल 3 लाख तक वो नील ही है और 6 लाख तक 5% है, और अगर आप 7 लाख की इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो 10% है, बट दिस इज बिफोर एग्जेम्पशंस। अगर आपने एग्जेम्पशंस के बाद वो जनरली कमी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, और आपको जरूर अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या आपकी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए अभी आपने और बजट में क्या क्या लग रहा है कि राहत देने वाला काम क्या? इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव ठीक है, उसके अलावा वित्त मंत्री के बजट में और क्या पिटारा खुलकर आया? एज अ रूल मेरा एक मानना है कि टैक्स बुरी चीजें नहीं होती, टैक्स आर नॉट बैड थिंग्स। टैक्स से देश चलता है, टैक्स से डेवलपमेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने काफी दिनों तक किसी और के लिए काम किया, एंड अब मैं अपने लिए काम करती हूँ। आई रन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो बोथ एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ लीडरशिप रोल्स विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने हमेशा एक बात कॉमन देखी है कि हम लोग ईज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिजनेस हम आसानी से कर सकें, काम हम आसानी से कर सकें। टैक्स पर से प्रॉब्लम नहीं होता है, हम चाहते हैं टैक्स देना, अगर आप दे सकते हैं तो क्यों नहीं, बिकॉज दैट इज नेशन बिल्डिंग। टैक्स हमारे लिए वापस इकोनॉमी में आता है, उससे हमें ही बेनिफिट्स होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में जो ईज बताए गए हैं वो सिर्फ टैक्स स्लैब के अलावा या सिर्फ टैक्स ही हम एक बात लेकर ना चले। मैंने यहाँ पर काफी सारे नोट्स लिए थे। हमको डायरेक्ट टैक्सेस में तो बेनिफिट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो काफी तरह की राहतें स्टार्टिंग के कुछ सालों के लिए सरकार ने इस बार भी अनाउंस करी हैं। डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफी इम्पिटस था,
एआई टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी गई थी। उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिए थे। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के लिए ई कोर्ट्स और अनाउंस में है। तो मैं ये मानती हूँ कि इट्स शुड बी अ हेल्दी मिक्स। चाहे वो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, जो काम कर रहा है, सिर्फ टैक्स पेयर नहीं है, वो इकोनॉमी में काम भी कर रहा है। एमएसएमईज फॉर एन एग्जांपल, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। सो हम सिर्फ तो टैक्स को हम अलग से इन मतलब टैक्स को अलग से ना देखें, टैक्स को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल थिंग देखें, कि जो हमको रिलीफ मिले हैं बजट से या हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको मिले, उनके साथ-साथ जब हम इस टैक्स बेनिफिट को जोड़ते हैं, तब हमको उसका बड़ा बेनिफिट दिखता है। इन सिंगुलैरिटी अगर आप सिर्फ टैक्स के बारे में सोचते रहेंगे और आप बाकी क्योंकि हमको जो पॉलिसी है, वो सबके लिए है। हम कितना अच्छे से उसका इस्तेमाल करके, हम कितने अच्छे से उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या अपने बिज़नेस में या अपने नौकरी में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो हमको एक ओवरऑल बेटर पिक्चर दिखाता है। ऑन एनी यूनियन बजट, ये वाला मैं मानती हूँ कि इतना रिफॉर्मेटिव नहीं था। हर साल कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट डेफिनेटली आता है, इस साल नहीं आया। हमको उम्मीद भी नहीं थी, प्री इलेक्शन बजट है। लेकिन मेरे को फिर भी ये लगता है काफ़ी इंक्लूसिव बजट था और काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी गई है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में काफ़ी बात करी गई है, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करी गई है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है, उसके लिए फंड बनाया गया है। तो मुझे लगता है माय पर्सनल थॉट इज़ कि more holistic than the last year's budget actually, क्योंकि सब चीजों के बारे में सोचा गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है। सिर्फ वो 3-4 प्रॉब्लम एरियाज के ऊपर ही हर बार हम बार-बार बात करते हैं। एक बहुत फीचर था जो इस बार ट्राइबल्स के लिए काफी नई स्कीम्स आई हैं, उनके एजुकेशन के लिए काफी इम्पेटस आया है। तो मुझे वो इनिशिएटिव्स काफी अच्छे लगे। अजीत जी, अभी स्टार्टअप के बारे में शर्मिष्ठा जी भी बात कर रही थी और इस बार बजट में ये रखा गया है कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये किस तरह का कदम है? युवा उद्यमियों को जो कृषि से जुड़े सेक्टर में होंगे, उनके स्टार्टअप को सरकार प्रायोरिटी पर रखेगी। देखिए, जब जब कोरोना हुआ लास्ट 3 इयर्स में, तो ये देखा गया कि बाकी सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी करीब करीब बंद हो गए अभी, माने एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। एक ही सेक्टर जो है इकोनॉमी का, वो भारत को बचाया, वो था एग्रीकल्चर। एक जो टिपिकल इकोनॉमिस्ट व्यू है, जिसे मैं कहता हूं बहुत ही सिली व्यू, वो उनका व्यू था कि भाई सिर्फ 15% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है और बाकी चीज सर्विसेज और इंडस्ट्रीज से आता है। ये वो भूल जाते हैं कि 65% इंडियंस जो है वो डायरेक्टली टाइड है टू एग्रीकल्चर, अपने इनकम के लिए, अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये जो है ना, ये जो अभी इस बजट को देखा जाए तो शर्मिष्ठा जी ने सही कहा, ये पहला बजट है जो मैं कहूंगा हैज ट्राइड टू चेंज द बैलेंस। ये बैलेंस जो है ये एग्रीकल्चर की तरफ ले गया है और उन्होंने ये एक चीज ध्यान में रखा है। इनफैक्ट एक चीज और याद रखिएगा कि ड्यूरिंग 2022 जब कोरोना था, उस बीच में देयर वाज अ मैसिव फार्मर्स मूवमेंट इन द कंट्री। तो तब जो है ये हाईलाइट हुआ कि कितना हर्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो उसको ध्यान में रखा गया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स है, वहां पर मेजर पुश है इस बार। और उन्होंने देखा कि सिर्फ धान और गेहूं उगाने से रिटर्न्स नहीं मिलेगा, तो वो सारा एरिया एग्रीकल्चर में जिसमें कि पहले फोकस कम था, उसको बढ़ाया गया है। जैसे कि मछली पालन, दूध फॉर एग्जांपल, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, इस पर मेजर पुश है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने पहले भी ये पॉइंट आउट किया था कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट बजट में 20 लाख करोड़ डाला गया है। दिस इज अ मेजर पुश फॉर एग्रीकल्चर। और यदि भारत को अपना सस्टेन करना है 7 to 8% ग्रोथ, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करके नहीं कर सकता। तो इसलिए उस पर मेजर फोकस है थ्रू ए मोर नुआंस्ड वे ऑफ डूइंग इट। डबलिंग ऑफ फार्म इनकम्स पर तो फोकस है ही 2016 से, पर इस बार जो है टारगेटेड जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जिसको माना जाता था पहले, उस पर जो है फोकस है।
ये जो है ना एक तरह से रूरल इंडस्ट्री को, छोटे एमएसएमई जो रूरल एरियाज में होते हैं उस पर मेजर फोकस देगा। फिर मैं दोबारा जरा इलेक्शन की तरफ एक पॉइंट आउट कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं इलेक्शन, आई डोंट मीन नेगेटिव। देखिए ये डेमोक्रेसी है। बजट होता क्या है? बजट जी बेसिकली takes the money from Peter and pays Paul. That is the basic concept of a budget. तो in a democracy जो बजट का काम होना चाहिए कि धनिक लोगों से लेके गरीब लोगों को दे, वो यदि नहीं किया तो neither the budget is democratic nor the budget is welfareist. तो मैं इलेक्शन से जब रिलेट कर रहा हूं तो पॉजिटिवली रिलेट कर रहा हूं। अब दुनिया भर का एडवांस्ड इकोनॉमीज लीजिए जहां पर बजट प्रेजेंटेशन होता है, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। मतलब कि बजट मस्ट बी डेमोक्रेटिक इन नेचर, और गरीब देश में जैसे कि भारत है, नेचुरली इट शुड फोकस ऑन द पुअर, ऑन द मिडिल क्लास, ऑन द रूरल माइग्रेंट। वो यदि नहीं किया तो बजट फेल कर रहा है, मतलब एलिटिस्ट बजट बन रहा है। उस सेंस में मैं कह रहा हूं इट्स द राइट फोकस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स 2024, नॉट इन अ नैरो नेगेटिव सेंस। तो उस सेंस में ये बजट चुनाव से जोड़ ही रहे हैं अजीत सर आप इस बजट को, तो फिर ये मान लें कि ये टैक्स स्लैब में बदलाव मास्टर स्ट्रोक हो गया मोदी सरकार का। चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा बदलाव कर देना, और ऐसा नहीं है कि इस बार वाकई में बजट में किसी का ध्यान नहीं रखा गया, मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस दिख रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस सांसद का भी बयान आया है कार्ति चिदम्बरम का कि बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है मध्यम वर्ग को, स्वागत कर रहे हैं वो टैक्स स्लैब को लेकर। तो क्या मान लिया जाए, बहुत बड़ा कदम ये चुनावों को देखते हुए? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं मानूंगा। देखिए क्या है कि मिडिल क्लास को रिलीफ पिछले 4 बजट में नहीं मिला, समझे ना। जो जी 2019 से जो ये मोदी सरकार आया सेकेंड टाइम, तो मिडिल क्लास के तरफ देखा ही नहीं। उसका मेन कारण था कि दे वर लिविंग अंडर ए फॉल्स इल्यूजन कि मिडिल क्लास तो हमारे साथ है। ये इल्यूजन था भाजपा का। वो जो है ना, मेरे अनुसार हिमाचल चुनाव में वो जो है पहली बार वो मिथ बर्स्ट हो गया। मिडिल क्लास रिबेलियन पर हिमाचल चुनाव उन्होंने हारा है। तो उनके दिमाग में आ गया कि यदि ध्यान नहीं देंगे मिडिल क्लास का, तो हमारा बैठा बैठा वो मतलब पाइड पाइपर वाला रोल नहीं है कि सारे हमारे पीछे हैं। मिडिल क्लास पर अलर्ट होता है। ऊपर से मिडिल क्लास जो है इन्फ्लुएंस करता है बाकी क्लासेस को। तो यस, ये देखिए, ये कहना कि गेम चेंजर है, ये तो पता चलेगा जब बजट इंप्लीमेंट होगा, तब पता चलेगा कि मिडिल क्लास खुश है कि दुखी है। बट अटेम्प्ट जरूर है एट क्रिएटिंग और पेइंग अटेंशन टू द मिडिल क्लास। मैं कहूंगा बोथ इन द अर्बन एरियाज एज वेल एज इन द रूरल एरियाज। गांव का जो मिडिल क्लास है, देखिए गांव का जो ग्रोथ है ना, वो है इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। तो मैं कहूंगा मिडिल क्लास ज्यादा, रूरल मिडिल क्लास और साथ ही साथ अर्बन मिडिल क्लास। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स जो पे करते थे, शर्मिष्ठा जी ने सही कहा कि बहुत स्मॉल परसेंटेज टैक्स पे करता है। रूरल जो पॉपुलेशन है वो हार्डली कोई टैक्स पे करता है, बिकॉज वी डोंट हैव अ लैंड टैक्स इन दिस कंट्री। तो बहुत स्मॉल पॉपुलेशन टैक्स पे करता है, उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड हो गया था इस कंट्री में। तो उसमें ये बजट पहला बजट है जिसको वो टारगेट किया है, डायरेक्टली रिलीफ दिया है। अब वो गेम चेंजर होगा कि नहीं, ये 2024 में पता चलेगा। और 9 असेंबली चुनाव है इस साल, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास के पास पहुंचा है कि नहीं, गेम चेंजर है कि नहीं। बट इट इज सर्टेनली एन अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए प्रो मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ, कह सकते हैं प्रो मिडिल क्लास वेलफेयर पुश। ये जरूर है इस बजट में। शर्मिष्ठा जी, क्योंकि बजट आज सभी बैठकर देख रहे थे कि क्या मिला और क्या नहीं मिला, मोटा मोटा आपसे समझना चाहूंगी कि इस बजट के बाद कौन सी चीजें अब महंगी होने वाली हैं और किन के दाम घटने वाले हैं? आपको पता है, जनरली हम लोग जब थोड़ा छोटे हुआ करते थे, पूरे बजट का हमारा जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता था, बस वो लिस्ट होती थी, नीचे आती थी ना, टिकट चलता रहता है, ये महंगा हुआ, ये सस्ता हुआ, ये महंगा। आज मैं देख रही थी वो ध्यान से, वो लिस्ट बड़ी छोटी थी, महंगी भी 2 चीजें कराई और सस्ती भी 2 चीजें कराई।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो चाहते थे कि हम थोड़ा ध्यान से बजट, आई थिंक मोबाइल फ़ोन्स वो सस्ता कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि थोड़ा-सा टेक में हमको स्टॉप्स मिले हैं, तो मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा। मुझे अभी भी नहीं लगता कि मुझे तब भी नहीं लगता कि आईफ़ोन तब भी सस्ता होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सो आई डोंट रियली नो कि उसका क्या कैसे है। मेटल्स आर गोइंग टू गेट लिटिल मोर एक्सपेंसिव, वो हमने देखा। इन्होंने काफ़ी सारा आई थिंक हेल्थ में जो केमिकल कंपोनेंट है ऑफ ऑफ मेकिंग द मेडिसिन्स, वो थोड़ा-सा नीचे जाएगा, क्योंकि कुछ इन्होंने रिबेट्स दिए हैं उसमें इम्पोर्ट्स में। एंड बाकी थोड़ा-सा और जब डिटेल में आएगा तब हम लोग डिस्कस कर पाएँगे। However, एक चीज़ जो मैं आई वांट टू टेक इट फ्रॉम अजीत सर एंड आई वांट टू टेक इट अहेड। मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ एग्रीकल्चर। सर एक बात तो ये, इकोनॉमिस्ट्स को एग्रीकल्चर से कोई दिक्कत नहीं होती है। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हमेशा ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करें। हमारी शिकायत ये होती है कि उसको आप इंडस्ट्री क्यों नहीं मानते? उसको आप इतना, वो हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, उसको आप इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करिए। उसको ना ग्रो करने का मौका दीजिए। हैफhazardly हम रिफॉर्म्स ना लाकर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लाएं, जहां हमको जरूरत है वहां रिफॉर्म्स लाएं, वहां हम फंड्स का इन्फ्यूजन कराएं। तो ये हम इकोनॉमिस्ट थोड़ा हाथ जोड़कर मांगते रहे हैं हमेशा अपनी सरकारों से कि अब हमारे देश में किसान को अगर हम अन्नदाता कहते हैं तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, वो एक्चुअली में है, वो एक्चुअली में अन्नदाता है। बिकॉज हमारे एमएसएमईज ऑल्सो are not industry centric, they are agriculture centric। हमारा जो 80% MSME है वो स्टेम आउट करते हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से। तो आज एक जो इंटरेस्टिंग बात पहले भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, इन्होंने एक फंड सेटअप किया है टू हैव एग्रीगेटर एक्सिलरेटर जो एग्रीटेक को प्रमोट करें। सो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, अब वो छोटे शहर में हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आप आईआईटीएन है या कुछ भी, आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस होता है, आपको दुनिया भर के केस स्टडीज होते हैं, बट आपको वो पेन पॉइंट नहीं होता। पेन पॉइंट तो किसान का होता है जो एक्चुअली में जाकर खेत में वो काम कर रहा है, उसको स्टोरेज की दिक्कत है, उसको उसका उसका सामान खराब हो जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, उसको मंडी का प्रॉब्लम, व्हाट है उसको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करता है, कई बार उनके पास बहुत अच्छी इनोवेशन भी होते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने की भी उनके अंदर काबिलियत होती है, उनके पास पैसे नहीं होते या उनके पास सपोर्ट नहीं होता। तो मैं एक पॉइंट को जरूर लॉट करना चाहूंगी कि उन्होंने एक एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड उन्होंने एक नया अनाउंस किया है। सो आई एम हैप्पी कि टेक और एग्रीकल्चर को मैच कराकर उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, ताकि वो टायर 2 और टायर 3 सिटी में जाकर उसका जो हमारे छोटे किसान है या जो इवन खेतीहार मजदूर भी है, अगर वो भी कुछ इनोवेटिव लेकर आ रहा है, एटलीस्ट उसके उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाएगी। अजीत जी, ये पहले से लग रहा था कि रक्षा क्षेत्र का बजट एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा और वही हुआ। पिछली बार से 13% ज्यादा जो है इस बार बजट रक्षा क्षेत्र का बढ़ा है। देखिए एक्चुअली डिफेंस पर जो खर्च होता है ना, एक तो ऑफ कोर्स डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, गिवन द फैक्ट दैट लास्ट 1 साल से आप यूरोप के बीच में देख रहे हैं लड़ाई चल रहा है, राइट? तो वी कैन नॉट टेक इट फॉर, पहले था एक एजम्पशन कि अब जो है वर्ल्ड पीस के तरफ जा रहा है। लास्ट पिछले 1 ईयर से जो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है और जिस तरह से सारे नेटो कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, तो डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट sort of, perhaps the most important for any economy। but उससे भी ज्यादा ये होता है कि डिफेंस में जब खर्च होता है ना, तो that translates into खर्च फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो फोकस है ना कि डिफेंस पे खर्च होगा भारत के अंदर, तो उससे जॉब क्रिएशन, उससे एक पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं एक दो चीज छोटा सा पॉइंट आउट करना चाह रहा था जो एग्रीकल्चर में हमने हाईलाइट नहीं किया। ये जो फोकस है जिसपे बहुत ही अच्छा फ्रेज उन्होंने यूज किया निर्मला सीतारमन ने, श्री अन्ना, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोकस है एग्रीकल्चर में बाजरा पे, रागी पे, रामदाना लड्डू पे, all those 15 मिलेट rather than राइस एंड व्हीट। तो ये अटेम्प्ट है जो पुराना एग्रीकल्चर भारत में था, जहां हम बहुत ज्यादा फोकस था पैडी पर, चावल और रोटी पर, उसको हटा के मिलेट्स के तरफ। ये
बहुत ही, मैं कहूंगा, दिस इज अनदर व्हाट आई वुड कॉल मेजर चेंज इन फोकस। और ये भारत के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो सब लोग मोटे मोटे हो जाते हैं चीनी और रोटी खा के, तो इसका जो है एक नया फोकस दिया गया है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा व्यूअर्स को, ऑल ऑफ देम शुड शिफ्ट फ्रॉम, स्पेशली दोज हु आर ओवर 40 शुड शिफ्ट फ्रॉम ईटिंग रोटी मेड ऑफ आटा टू दीज मिलेट्स, स्पेशली रागी, जिसको जिसको डिफरेंट नेम से भारत में रखा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च क्रिएट किया गया है, जिसको श्री अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का नाम दिया गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, विच वी डिड नॉट फोकस ऑन, क्रिएशन ऑफ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस। ये 157 मेडिकल कॉलेजेस, ये जो आइडिया है कि एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, तो साथ ही साथ मैसिव शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग, सारे नर्सेस चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, तो मैसिव शॉर्टेज है हॉस्पिटल्स में, जो फिर हाईलाइट हुआ था ड्यूरिंग कोरोना। तो द क्रिएशन ऑफ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस और मैसिव स्पर्ट इन मेडिकल एजुकेशन और खर्च टुवर्ड्स मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोरोना के कारण, और दूसरा पास्ट में ये नेग्लेक्ट किया गया था। तो ये जो है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस एंटायर बजट। शर्मिष्ठा जी, हम टैक्स स्लैब के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि ये सीधे मिडिल क्लास से रिलेट करता है। एक चीज जो महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी कि महंगाई से राहत के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा बजट में, आपके हिसाब से कुछ ऐसा मेंशन नजर आया कि महंगाई से अब आने वाले वक्त में राहत मिल जाएगी? समझदारी से ना ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आसपास से निकलते हैं। मैं बहुत देर तक सोचती रही कि कुछ डायरेक्टली बोले कि भाई ये सस्ता हो गया, दालें सस्ती हो गई, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। वो नहीं हुआ। मतलब वो थोड़ा मेरे लिए हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट था। डायरेक्टली उन्होंने इन्फ्लेशन को एड्रेस नहीं किया बजट में। मजाक में हम लोग ये बात कर रहे थे कि इनकम का टैक्स हो तब देंगे ना, पहले इनकम होगी फिर टैक्स देंगे फिर खर्चा करेंगे, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो नहीं हुआ। आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर बात हुई। पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बात नहीं हुई। हमको पता है कि क्रूड इस वक्त एकदम स्टेबल है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ तो एसओपी आएगा उसमें, पर वो नहीं आया। लास्ट बजट में जैसे इन्होंने एक बहुत ज्यादा इम्पेटस दिया था ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज एंड एवरीथिंग, तो टेकिंग फ्रॉम दैट, और इस साल इतना वॉलेटिल रहा पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस पूरे साल, तो पर्सनली मैं ये सोच रही थी कि उसके ऊपर एक मेजर चंक आएगा उस बात के ऊपर। गति शक्ति इन्होंने लास्ट बजट में अनाउंस किया था कि उसको आगे बढ़ाते हुए, देखिए एक ओवरऑल बात बताती हूँ। हर साल बजट आता है, हम बजट को डिस्कस करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। पिछले बजट में क्या अनाउंस हुआ था उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पॉलिसी मेकर्स आपका चैनल देख रहे हो और अगर वो सुन रहे हो, तो एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ वुमन, एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि 10 मिनट का सेक्शन सर, जो भी सर या मैडम जो भी उस वक्त फाइनेंस को लीड करेगा कंट्री के, वो 10 मिनट का एक सेक्शन एक रिव्यू के लिए भी रखिए कि पिछली बार हमने ये सब अनाउंस किया था, ये हमारे नई स्कीम्स आई थी, ये हमने करने का सोचा था, हमने वो कितना परसेंट या कितना कुछ हमने उसमें अचीव किया। लेकिन लाइक गति शक्ति पिछले बजट में एक बहुत बड़ा फीचर था अबाउट मूवमेंट, अबाउट मोबिलिटी, डिफरेंट वेज ऑफ मोबिलिटी, जो एक बहुत बड़े लॉक जैम में फंसा बिकॉज ये पूरा साल डीजल ऑयल के प्राइसेस बहुत वॉलेटिल रहे, ऊपर जाते रहे। वॉर भी था, देखिए ये भी नहीं है, वो बहुत एक्सटर्नल एक फैक्टर था जो किसी के हाथ में नहीं था, वॉर की वजह से भी हुआ। तो मैं उम्मीद कर रही थी कि एक बड़ा सॉप उसके ऊपर आएगा, बट वो नहीं आया। तो इन्फ्लेशन को ड्यू टू सम रीजन डायरेक्ट एड्रेस इस बजट में नहीं मिल पाया। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का आपने पॉइंट उठाया था जीत जी के साथ, मैं एक पॉइंट उसमें ऐड करना चाहूंगी जो अच्छा है। हमारे लिए ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वी हैव द लार्जेस्ट टेरिटोरियल आर्मी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। हमारा सबसे बड़ी आर्मी है टेरिटोरियल दुनिया में। फिर भी जो हथियार हम यूज करते हैं, जो एमिनेशन हम यूज करते हैं, बहुत सारा सिग्नलिंग जो हम यूज करते हैं वगैरह वगैरह, हम हमेशा ही इम्पोर्ट करते आए हैं ट्रेडिशनली। और उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटी का रीजन बताते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। बट इस सरकार ने, इस रजीम ने एक अच्छी बात जरूर करी है कि उनमें से काफी सारी ऐसी चीज हैं जो उन्होंने मैंडेटरी कर दी हैं कि आपको इंडिया मेड ही खरीदनी पड़ेगी। यू हैव टू मैन्युफैक्चर देम इन इंडिया, और वही आप डिफेंस में यूज कर सकते हैं।
तो ये जो बजट में इंक्रीज है वो एक्चुअली जैसे अजीत जी ऑलरेडी बोल ही रहे थे कि बजट का जो डिफेंस का जो बजट होता है वो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है मेजरली, जो क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये ओवरऑल एक ब्लैंकेट बैन आ चुका है इंपोर्ट्स के लिए, बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें हैं, कोर में है, सिग्नलिंग में है, वो हमको मेक इन इंडिया ही अब डिफेंस में यूज हुआ करेंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत दिस इज मनी वेल स्पेंट कि अगर वाकई में इस इम्पेटस के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ और अच्छा कर सकें, एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात, और एम्प्लॉयमेंट तो है ही, हम सेल्फ सस्टेन होते चले जाएं, सो मेरे लिए ये इंक्रीज इन बजट इज वेलकम। सो एज लॉन्ग एज उसका हमको वो भी एक तरह से डायरेक्ट हमको इम्पैक्ट देखने को मिलना चाहिए इन मे बी अनदर 3-4 years टू कम, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट फोकस रहा है मोदी गवर्नमेंट का कि रक्षा के क्षेत्र में हम अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, तो इसलिए ये तो पहले से लग रहा था कि रक्षा के क्षेत्र का जो ये बजट है वो बढ़ेगा, तो उस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है मोदी सरकार ने। मैं अजीत जी आपके पास आऊंगी, एक सवाल मुझे शर्मिष्ठा जी से लेना है क्योंकि मेरे मन में लगातार ये बात चल रही थी, महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि उन्हें बजट में कुछ राहत नहीं मिली या महंगाई से राहत के बारे में कोई डायरेक्टली बात नहीं हुई। एक पॉइंट जो महिलाओं के लिए बड़ा निराशाजनक हो सकता है कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के दाम अब सब बढ़ महंगा हो जाएंगे गया, शर्मिष्ठा सब जी। जी जी। महंगा हो गया। बट मेरी मम्मी खुश होंगी, उनके पास हिस्टोरिकली सोना है तो वो शी इज रिचर नाउ, उसी सोने की वैल्यू बढ़ गई है। बट मेरे को लगता है कि प्रेशियस मेटल इज अ ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटी। उसमें हम क्योंकि हम काफी टाइम से देख रहे थे कि बुलियन भी काफी तेजी से ऊपर जा रहा था, और सोना ही डिटरमाइन करता है प्लैटिनम और चांदी का भाव। तो अगर सोना ही स्टेडीली ऊपर जा रहा है तो बाकी प्रेशियस मेटल अपना उसी के पीछे पीछे चलता है। तो वो तो हम आई थिंक अजीत जी को ऑलरेडी पता होगा, पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट हम स्टेडी ग्रोथ ही देख रहे हैं उसमें। सो थोड़ा सा ट्रेंड के साथ, बट डिसअपॉइंटिंग, नहीं खरीद पाएंगे इस साल कुछ ज्वेलरी, कोई बात नहीं, कुछ कुछ एक इन्होंने सेट किया है ना यूनिटी मॉल, इन्होंने सजेस्ट किया है कि हर हर स्टेट को एक यूनिटी मॉल ऑफ यूनिटी बनाना चाहिए, सो दैट वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको शोकेस कर सकें। और तो सोना नहीं खरीद पाएंगे पल्लवी, कुछ हैंडीक्राफ्ट का अच्छा खरीदेंगे, कुछ ऐसे पहनेंगे, और क्या कर सकते हैं। सो अगर सोने में थोड़ी राहत आती, बट देखिए फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ गुड थिंग। सोने में तेजी रहना इकोनॉमी को तेज लेके जाता है, तो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुरा डिसीजन नहीं है। सो ये हम समझते हैं इस बारे में। अजीत जी, अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महिला सम्मान बचत योजना इसका नाम दिया गया है, इसका जिक्र भी आज उन्होंने किया। किस तरह की ये योजनाएं हैं और महिलाओं के लिए ये कैसे अब आने वाले वक्त में बड़ा लाभकारी होने वाली हैं, क्योंकि आप लगातार इलेक्शन से रिलेट करके भी बातें समझा रहे हैं, तो इलेक्शन आने वाले हैं, महिला बड़ी अच्छी वोटर हो गई हैं, और ऐसा तो माना ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं। तो अब ये जो नई योजना स्पेशली महिलाओं के लिए आई है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहला थोड़ा सा फिगर्स दिया जाए। 1957 में जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, 47 में, 10 साल बाद जो मेन मतदान जो होता था, जो मेन का और वेमेन का, उसमें जो मुझे याद है करीब करीब 20-25% का गैप था। वो जो है ना, गैप उलट गया है आज। आज ज्यादा महिलाएं वोट देती है कंपेयर टू मेन ओवरऑल देश में। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स है, जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जहां पर जनरली माना जाता है कि हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, जिसे बीमारू स्टेट्स कहा जाता है, वो बैकवर्ड है। सदर्न स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स इंडिया का डेवलप्ड है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में पिछले 10 साल में औरतों का मतदान जो है मेन से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब इंडिया फंडामेंटली ऑल्टर कर रहा है पॉलिटिकली, सोशली। और एक चीज और बता दूं कि वोटर टर्नआउट, मतदान तभी बढ़ता है जब एजुकेशनल लेवल बढ़ता है दुनिया भर में। जैसे केरला, बंगाल, सबसे हाईएस्ट एक जमाने में वहां वोटर टर्नआउट होता था। उसका कारण था लिटरेसी रेट केरला और बंगाल का हमेशा हाई होता था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पर आज ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, जहां पे यूजुअली बहुत लो था एजुकेशन लिटरेसी रेट्स, वहां पे लिटरेसी रेट्स आज
the growth in literacy rates are higher than the rest of the country. बिहार को लिया जाए, literacy rates among women was in the last 10 years 19%, पूरे देश में 16%. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरा भारत का जो चित्र है ना, वो बदल रहा है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली. इनफैक्ट बीच में एक बहुत बड़ा डिबेट चला था कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है लेबर में, वो घट गया है. इनफैक्ट नए फिगर्स आए हैं, वो भी बदलने लगा है. तो ये जो पुश है टुवर्ड्स विमेन जो आपने हाईलाइट किया, मुझे मेरे अनुसार और भी होना चाहिए था. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी women are running the Indian economy, तो उसको और पुश देना चाहिए. बट डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने कुछ तो किया है. तो ये जो पुश है ना, ये इंडिया के चरित्र पूरे मैं कहूंगा एक तरह से पॉपुलेशन को ऑल्टर कर देगा इन टर्म्स ऑफ इट्स स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स लिटरेसी कोशेंट, और उसका जो है डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में. ज्यादातर आप देखेंगे, जब मैं इस प्रोफेशन में आया पहले, मीडिया में फॉर एग्जांपल हार्डली लड़कियों को मैं देखता था ऑफिसेज में. आज आप कोई भी टीवी चैनल में चले जाइए या कोई भी ऑफिस में, दे आर लार्जली रन बाय वुमेन, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट पोजीशंस. सारे टॉप एडिटर्स एंड अदर्स मोस्टली आर वुमेन. मोस्ट ऑफ माय कॉलीग्स जहां मैं काम करता हूं या जहां करता था, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन. लिटरेसी रेट्स, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक जमाने में फैकल्टी में 70-80% मेन होते थे, एंड स्टूडेंट पॉपुलेशन में भी. आज बिल्कुल रिवर्स हो गया है. ये जो है ना, इसके बारे में बहुत कम लिखा जा रहा है. बट इंडिया जो है बिल्कुल चेंज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द जेंडर इक्वेशन. तो ये जो बजट में थोड़ा बहुत जो अटेम्प्ट किया गया है, ये बहुत अच्छा है वोट के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, और देश के सोशल रियलिटी के लिए. तो इससे मैं कहूंगा वेरी पॉजिटिव. एंड द वेरी फैक्ट, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भारत में वुमन, पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया वुमेन, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है. यूरोप में फॉर एग्जांपल सेवरल कंट्रीज में, 13 कंट्रीज में डिफेंस मिनिस्टर वुमेन हो चुकी है. तो ये जो एक फोकस था, पहले भी अटैक था बीजेपी पर. बीजेपी पैट्रियार्कल पार्टी है. आरएसएस में जो है, संघ में वुमेन का जो है एक तरह से ज्यादा प्रेजेंस नहीं है. तो ये जो है अटेम्प्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. महिला सशक्तिकरण की नजर से देखा जाए तो एक अच्छा कदम इसे माना जा सकता है कि आप महिला या लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए तक का निवेश करेंगे तो लगभग 7.5% जो है ब्याज मिलेगा. तो ये एक अच्छी योजना यहाँ पर लागू की गई है. रोजगार के लिए आपको क्या दिख रहा है शर्मिष्ठा जी इस बार के बजट में? क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दा बन के इस बार उभरे हैं. तो महंगाई पर कोई डायरेक्टली राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है. रोजगार के मोर्चे पर लग रहा है कि सरकार ने इस बजट में कुछ अच्छा रखा. देखिए, रोजगार में भी डायरेक्टली उन्होंने ना कोई प्रॉमिस किया, ना उन्होंने ये कहा कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए. उन्होंने कुछ डायरेक्टली बोला नहीं है. बट घुमा फिरा के जैसे उन्होंने कोऑपरेटिव्स के साथ उन्होंने आज एक अनाउंसमेंट करी कि अगर आप एक कोऑपरेटिव का पार्ट है, एंड मैं लोअर मिडिल क्लास एक कोऑपरेटिव एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रही हूँ. देखिए, 2 चीजें हो गई हैं पिछले 5, 6, 7 साल से. जो ओवरऑल रोजगार का मुद्दा है ना, वो यहाँ से हटकर कि हमको सरकारी नौकरियां मिल जाए या हमको प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी नौकरियां मिल जाए. बहुत सारे युवा ने ये बात समझ ली है कि हमको अपना काम करने की कोशिश करनी चाहिए. ये जो है पिछले 7-8 साल में, 10 साल में, भले वो मजाक में आया हो या सीरियस होकर आया हो, लेकिन युवा इस बात को, युवा भी और घर के लोग भी, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तब आप ये बोले लाइक आई एम आल्सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो इस बात को कोई जल्दी से समझ ही नहीं पाता था कि तुम बिजनेस करोगे, क्यों करोगे, सरकारी नौकरी ट्राई करो, या सरकारी नौकरी से आगे बढ़कर हुआ कि अच्छी एमएनसी में नौकरी ट्राई करो. तो वो एक मेजर चेंज सोच में आया है, माँ बाप की तरफ से भी आया है कि ठीक है, अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसमें उनको सपोर्ट मिलने लग गया है. मुझे ऐसा लगने लग गया है कि सरकार भी ना उसी
दिशा में सोचने लग गई है। तो हमको बहुत सारे एसओपीज़ दिखते हैं स्टार्टअप्स के लिए कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये रिबेट है, आप ऐसा करेंगे तो आपको वो फ़ायदा है। कोऑपरेटिव्स का मैंने आज एक पॉइंट देखा कि उन्होंने एक मिनिमम जितना आप कोलैटरल फ्री लोन ले सकते थे, उसका उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया है पर पर्सन एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। बट डायरेक्ट ये बोलना कि इस बजट में हम ये अनाउंस करते हैं कि हम इतना बजट एलोकेट कर रहे हैं कि आईटी की नौकरियाँ इतनी बढ़ जाएँ या अगर आप सेक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट हम ये काम कर रहे हैं ताकि आपकी नौकरियां बढ़ जाएं, ऐसा कोई अनाउंसमेंट मुझे नहीं मिला। इसकी भी उम्मीद थी कि कम से कम जो इस तरह के सेक्टर्स थे जिन पर सीधा सीधा कोविड की वजह से जिनको नुकसान हुआ है, टूरिज्म फॉर एन एग्जाम्पल, तो टूरिज्म के ऊपर इन्होंने काफी बोला कि आप जी टूरिज्म को प्रमोट करिए, काफी सारी बातें, बट वो डायरेक्ट एक कोई अनाउंसमेंट कि वो ये बोले कि अगर इस वक्त आप अगर कोई भी कंपनी है जो 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है तो सरकार की तरफ से उनको इतना रिबेट है। इस तरह का अगर कोई अनाउंसमेंट होता है तो इंडस्ट्री को डायरेक्ट एनकरेजमेंट मिलता है। क्योंकि देखिए कोविड के बाद थोड़ी इकोनॉमी तो हिली भी है और लोग थोड़ा ना पहले क्या हो रहा था कि ये पूरा कोविड एंड लॉकडाउन के जो पूरे कल्चर ने ना हमको एक बात से डरा दिया है कि अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, कोई भी तैयार नहीं होता है उसके लिए। तो हम लोग थोड़ा ना कैश कॉन्शियस हो गए हैं कि जो हमारे पास है उसको हम थोड़ा बचाकर हिसाब किताब से लेकर चलें। तो अगर सरकार थोड़ी इस तरह की अनाउंसमेंट्स करें, आप इस तरह से इंडस्ट्री को एसओपी दें कि लाइक आईटी हमारा टेलीकॉम फॉर एन एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हमारा बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। नॉट मिनिस्ट्री सेक्टर, तो अगर वो सेक्टोरल पे एसओपी दे दें कि अगर आप आपकी कंपनी में आप एक साथ 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो सरकार की तरफ से आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस तरह के अगर कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स दिखते तो हमको शायद एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा राहत मिलती। बहुत ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट्स मुझे यहाँ दिख नहीं पाए, कुछ हमको उम्मीद जरूर थी। अजीत जी जरूर मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि इलेक्शन बेसिकली 2 ही मुद्दों पर लड़ा जाएगा इस बार, महंगाई पर और बेरोजगारी पर, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड। एक महंगी हो रही है, दूसरा घर में कमाने वाले कम हो गए हैं। जी। ठीक है अजीत जी, जीडीपी के बारे में आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अब मैं आपसे कमेंट जरूर चाहूंगी इस पे। अब जो ये बजट आया है इसके बाद आप तमाम चीजों को अगर एनालिसिस करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ क्या रहने का अनुमान है और बुनियादी ढांचागत विकास के लिए सरकार अब आने वाले समय में क्या करने वाली है, ये तमाम तरह के सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। एक सवाल जो आपने मुझसे पहले पूछा, मुझसे और शर्मिष्ठा जी से, जो हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि डिटेल्स नहीं आया था फॉर योर रीडर, वो करके मैं जीडीपी पर जाता हूं। जी जी जी, आपने बिल्कुल कहा था कि ये जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स जो है उसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देते हुए, तो देखिए 15 लाख के ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं है, यू हैव टू पे टैक्स, राइट। बट यदि 15 लाख आपका एनुअल इनकम है तो पहले आप देते थे 1.87 लाख टैक्स, अब वो घटा के हो गया है 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो उसमें एक तरह से देयर इज अ रिलीफ। 15 लाख जो टैक्स देता है, यदि आप फॉर एग्जांपल 9 लाख देते हो तो इन दैट केस आपको 45,000 जो है देना पड़ेगा टैक्स। तो दीज आर इंपॉर्टेंट रिलीफ जो 15 लाख के नीचे जिसका इनकम है एनुअल, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि इनकम टैक्स रिबेट जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। तो बेसिक चेंजेस जो है ये 7 लाख से लेके 15 लाख तक का जो जिनका इनकम है उसी के लिए ये टैक्स रिबेट है। अब बैक टू द इशू आपने जो पूछा कि ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी जो है ना, मेरे अनुसार यदि वर्ल्ड इकोनॉमी देखा जाए, याद रखिएगा कि दुनिया में अभी ग्लोबल रिसेशन चल रहा है और जी इंपॉर्टेंट कंट्रीज लेड बाय द यूएस और यूरोप, वहां पे जो है एक तरह से बहुत ही सीरियस रिसेशन है और ये कंटिन्यू करेगा 2024 तक। कुछ लोग कहते हैं 2024 के अंत तक, कुछ लोग कहते हैं 2024 के बीच तक। सेकेंड, जापान और चाइना में, जापान में तो खैर परमानेंटली स्लो डाउन है, बट चाइना में स्लो डाउन हो गया है, 3.5% पर उसका ग्रोथ आ गया है। तो ग्रोथ जो है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का, वो एक एक बहुत ही, मैं कहूंगा वी मस्ट फील प्राउड ऑफ इट कि इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट
इतना प्रेशर है चारों तरफ, ग्लोबल रिसेशन, पेंडेमिक एंड एक वॉर चल रहा है। अब करीब करीब फरवरी में जाके वो वॉर इन यूरोप 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। डिस्पाइट प्रेशर्स इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है करीब 6 से 7% पे। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी पर जो फोकस है 10.5%, वो बेसिकली वो होता है एक तरह से एस्टिमेट, मतलब क्या होगा। तो वो कट के करीब 7 से 8% पे ग्रोथ हो सकता है। आज बजट ही नहीं, कल आईएमएफ का फिगर्स आया और उन्होंने भी माना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है करीब करीब 6.5 से 7% पर ग्रो करेगा। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ जो है, इस पर भी एक डिबेट है। कुछ लोग ग्रोथ को ये मानते हैं कि अरे ग्रोथ हो रहा है पर गरीबी बढ़ रही है। नॉट ट्रू। ग्रोथ जो है, इट्स एन एस्टिमेट ऑफ टोटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और सर्विसेज में गरीबों का भी सैलरी आता है, उसका भी सर्विस आता है। तो यदि ग्रोथ होगा, ग्रोथ हो तो पूरा देश आगे बढ़ता है। ग्रोथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में मेजरमेंट किया जाता है। तो गुड ग्रोथ इज पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, फॉर ऑल क्लासेस। गरीब भी उसमें बेटर ऑफ होते हैं, धनिक तो बेटर ऑफ होते ही हैं। तो ये जो फोकस है ग्रोथ पर, और इसको 3-4 तरह से किया गया है। एक, ये इसी बजट में नहीं, इसके पिछले बजट में भी जम के जो है फोकस किया गया ऑन रिफॉर्म्स, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे रोड्स बनाएंगे, अच्छे ब्रिजेस बनाएंगे, तो नेचुरली कंट्री ग्रो करेगा, बिकॉज द स्पीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट विल इंक्रीज, है ना। थिंग्स विल मूव फास्टर। लोग जो है, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है। ईस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न बिहार वगैरह इतना गरीब इलाका है, जैसे ही वहां आप 4 रोड बना दीजिए, पूरा गांव का इकोनॉमी बदल जाता है। लोग का एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप बढ़ जाता है। जो लोग रोड के बगल में रहते हैं, वो खटाखट दुकान शुरू कर देते हैं, कुछ और शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे औद्योगिक ये वो शुरू हो जाता है। तो ये जो फोकस है मोदी गवर्नमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो इसको मैं कहूंगा परहैप्स द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ this budget also, and general focus of the Modi government on growth is very इसमें एक चीज और मैं अजीत सर ऐड करना चाहूंगी, उस पर भी आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। पूंजी निवेश परिव्यय 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। जी हाँ। ये किस तरह का निवेश होता है, मैं चाहूंगी कि आप इसको ढंग से डिस्क्राइब करें। और क्योंकि हम जीडीपी की लगातार बात कर रहे हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी यहाँ बात करना बनता है। कैपिटल गेन्स, केपेक्स जो है, उसका आउटले बढ़ा दिया गया है 33%, मतलब 25% से। तो अगेन कैपिटल, जो कैपिटल पे यदि फोकस किया जाए तो ग्रोथ बढ़ेगा। वो जो है ना, बेसिकली ग्रोथ एनहांसिंग होता है। तो आई थिंक वो बहुत, मतलब आई थिंक दिस इज अ बिगर गेम चेंजर। जो आपने पूछा, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर गिवन ग्लोबल रिसेशन एंड गिवन दिस कोरोना, प्राइवेट सेक्टर जिसके पास पैसा भी था, वो बैठा हुआ था, वो खर्च नहीं कर रहा था। दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर private sector. This will be a big boost for investment in general. Major increase actually 25 से 33%। तो ये जो है ना, ये बेसिकली ग्रोथ एनहांसिंग होता है। एनी काइंड ऑफ, इनफैक्ट सर निष्ठा जी विल गिव यू अ बेटर आंसर ऑन दिस। एनी काइंड ऑफ expenditure, any kind of push towards capital, sort of base, any kind of push towards capex is very positive, मैं कहूंगा, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड व्हाई, बट ये बेसिकली क्या करता है, ये जब आप खर्च करोगे पब्लिक सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट कर देता है। तो एक चीज हमने देखा इस बजट में, कोई न्यू प्राइवेटाइजेशन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। पहले ही अनाउंस हो चुका था बजट के पहले, राइट। देयर वाज अ मेजर पुश बाय द मोदी गवर्नमेंट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, वो हो चुका। तो इस बार के बजट में वो साइलेंट है।
But at the same time, I would consider this a major focus on इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म। और ये जो है ग्रोथ एनहांसिंग होता है दुनिया भर में, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ये जो है प्राइवेट सेक्टर एक तो बैठा हुआ था और नहीं तो बाहर भाग रहा था। लॉट ऑफ वी हैव रेड स्टोरीज ऑफ how lots of entrepreneurs in India were moving to the Middle East, moving to Dubai or Canada or other places. तो I think ये जो है ना ग्लोबल रिसेशन हो रहा है, तो this is very very good both for India and also I think very important for attracting foreign capital. वो जाएंगे कहाँ? चाइना जो मैंने पॉइंट आउट किया स्लो डाउन हो गया है, बाकी जगह बेसिकली ग्लोबल रिसेशन है। इनफैक्ट अभी जो वर्ल्ड का आप टोटल ग्रोथ ले लें तो 50% ग्रोथ सिर्फ 2 कंट्री से आ रहा है, इंडिया और चाइना से। 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो ये जो है ना इस तरह का पुश इन केपेक्स, ये अकॉर्डिंग टू मी दिस विल रियली बूस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ मच बियॉन्ड जस्ट 2024। इसी पर आपका कमेंट भी मैं चाहूंगी शर्मिष्ठा जी, और ये भी कि प्राइवेटाइजेशन इस बार सच में इस सरकार ने अपना मुंह बंद रखा और इस पर कुछ भी नहीं बोला गया, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका जो प्राइवेटाइजेशन का मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि अब कुछ खास बचा नहीं है। जहां हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते थे हमने काफी कुछ ऑलरेडी कर लिया है। सबकी तरह मैं उतनी ज्यादा उसके साथ मैं उसके लिए इतना नेगेटिव नहीं हूँ। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा नहीं है। अगर वो ठीक से चलाया जा सके तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज वर्क इन अ मॉडल जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को साथ ही साथ में ग्रो करने का मौका दिया जाता है, बट क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा लॉ ऑफ द लैंड स्ट्रांग है तो ये बहुत वेलकम स्टेप है, तो करप्शन नहीं होता और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अब मैं आपको इसमें एक सेंटेंस जिसने which made me smile, और मैं आप समझाऊंगी, अजीत जी बोल रहे थे तो मैं just tell you why. Increased capital investments outlay by 33.4% to 10 lakh crores. तो I smiled. Why did I smile? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट्स में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं, उस पैसे को रेज करने का भी एक खर्चा होता है। तो जितना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता जाता है, आखिर में वो कैपिटल की इंट्रिंसिक वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू को कम कर देता है। क्योंकि अगर आपने 10 रुपए कमाने में 2 रुपए खर्च कर दिए तो एक्चुअली आपको उसको वैल्यू 8 रुपए की मिलती है ना। वो जो एक जोन होता है उसमें आकर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अटक जाती हैं। क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर देखता है वो क्या देखता है कि जहां पर लॉज, रूल्स, फॉरेक्स के रेट्स, जैसे हमारा आरबीआई है, आरबीआई के रेट्स हम काफी स्ट्रिक्ट मानते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। तो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है नहीं हिंदुस्तान में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हिंदुस्तान में इजीली 5 to 8% पर आता है। तो अगर हम सपोजिंग किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रेज करना चाहें तो सिर्फ उसको रेज करके देश में लाने का कॉस्ट 5 से 8% निकल जाता है। तो अगर उसमें से 10% ऑलरेडी खर्चा हो गया इससे पहले कि देश में वो पैसा आया, तो वो ना प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत नीचे ले जाता है। तो इसलिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस डरते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से। ये क्या होता है? व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट आउटले? इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब ये है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए वो बहुत बार उस देश के इंस्टीट्यूशंस खुद दे देते हैं। सरकार दे सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे सकता है, कोई भी हमारा बड़ा इंस्टीट्यूशन दे सकता है, ठीक है। उसका एक लिमिट होता है, उसका एक क्वांटम डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है कि हमारा आउटले इतना ही % होगा, बाकी आप पैसा रेज करके लाइए, बॉन्ड्स के अगेंस्ट, कैसे भी लेकर आइए, दैट्स आईपीओ लाइए, कुछ भी करिए कैसे भी, या फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइए, पीई लाइए, वीसी लाइए, किसी को भी लाइए। सरकार ने वो जो कंफर्ट होता है आउटले का उसको बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब हमको कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगा है उसके बावजूद, क्योंकि काफी सारा रिस्क ऑलरेडी इंडिया बेस्ड इंस्टीट्यूशन ने ले लिया है शुरू का। जैसे हम आपको बोले कि आप एक बेकरी अगर खोलना चाहें और आपको आपकी मम्मा बोले या घर में कोई बोले कि देखो तुम्हारे बिजनेस में मैं डायरेक्टली पैसा तो नहीं दे सकती, पर तुम मेरे घर में जो पुराना ओवन रखा है उसको तुम यूज कर लो, या ये 4 चीजें घर में रखी उसको आप यूज कर लो, तो अल्टीमेटली आपको खर्चा कम पड़ेगा।
सो ये है, दिस इज व्हाट दिस इज। सो जो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास जो एसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, सरकार प्रोबेबली अलाउ करेगी कि उसी को आप टोकनाइज कर लीजिए या उसी को आप मॉर्गेज कर लीजिए, और हमारे इंस्टीट्यूशंस इनिशियली जो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उस उन प्रोजेक्ट्स को वायबल करने के लिए, ये बिग इंफ्रा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट एसओपी है। जो बिग इंफ्रा में इन्वेस्ट करते हैं, जहां आपको डैम्स बनाने, आपको सड़कें बनानी, आपको बड़े एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, उससे दो फायदे हैं। एक तो इन्वेस्टर को लगता है कि अब इसमें सरकार की स्किन आ गई है, भले उन्होंने डायरेक्टली पैसे नहीं दिए हैं, बट कैसे ना कैसे सरकार ने अपना ब्लेसिंग दे दिया है या उसने अपनी स्किन डाल दी है प्रोजेक्ट में, तो उनका कंफर्ट बढ़ जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो चीजें होती है, एक होती है इन्वेस्टर और एक होती है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो इन्वेस्टर को आप पकड़ के, आप इन्वेस्टर सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है, अगर उसको ठीक लग रहा है तो वो पैसे दे देगा, उसका कोई ना बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सो ये फॉर इन्वेस्टर सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इन्वेस्टमेंट्स तो अल्टीमेटली आएंगी, बट सर भी जैसे बोल रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा घबराता है, तो इसके साथ एक तरह से इनडायरेक्टली सरकार ने एक हैंड होल्डिंग दी है कि इनले आउटले हम बढ़ा देंगे। तो इनिशियली जो आपको प्रॉब्लम जोन्स हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई हो गया, वॉर के बाद और हाई है इस वक्त, सो उन सब चीजों में राहत मिलेगी। एंड इंडिया इज अ गुड मार्केट। बड़ा इन्होंने एक फंड भी आज अनाउंस किया है, पल्लवी में साथ में उसको भी ले आऊंगी। दे हैव आल्सो अनाउंस्ड अर्बन डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फंड सरकार ने अनाउंस किया है टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट साबित होगा, क्योंकि जब इंडिया में शुरू में डिस्ट्रेस्ड एसेट्स की कहानी शुरू हुई, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे। फिर सरकार की तरफ से एसबीआई कैप्स के साथ मिलकर स्वामी फंड बनाया गया, जिन्होंने हमारे यहाँ रुके हुए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को फंड करना, बेल आउट करना शुरू किया, फंड करना शुरू किया। उसके पीछे पीछे बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, काफी फंड्स आए। तो मुझे लगता है इसमें उसी तरह का इफेक्ट कुल मिलाकर देखा जाए तो हर सेक्टर पर सरकार ने ध्यान दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर छूटा है। हालांकि कुछ चीजें रह गई हैं जो अभी लोगों को भी लग रहा है कि महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कर पाई। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये पूरा बजट ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ देता है। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर चुकी हैं। जाते जाते हम आपको ये भी सुनाते हैं कि बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An
An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. One hour, 25 minutes. Item number 1, money. Item number 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100.
We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN, and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022.
The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode
with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu,
Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new pharma program, a new program to promote
Research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti, and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes.
Ekalavya model residential schools. In the next 3 years, center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker.
Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land, and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states, and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts.
This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores.
Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jandan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally
sustainable, and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme, 500 new waste to wealth plants under Gobardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Gobardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund, and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds
to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers, including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce
that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be to comprehensive regulations. Side, the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase
of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5%
of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed.
India is a global leader, as I said in part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars, and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials, for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap, and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers
for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I'm providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I'm providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class.
The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I'm proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these,
I'm also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. अन्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी.